So is my screen visible now? Hello. So is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we are going to start the new chapter, and that is a linear time invariant systems. Now, why this is very important, we'll come to know, because what you will observe that most of the systems or a very large class of systems, they belong to this category, linear and time invariant. So we have seen there are many properties that a system can possess, but these two properties are very important properties. So if I define a LTI system, so it is a system is said to be LTI if it is linear and time invariant. Okay. So maybe stable, non-stable, invertible, non-invertible, causal, non-causal, no issues. But it must have two properties, linearity and time invariance. So we have already explained you the the property of linearity and time invariance. Okay. So why LTI system again? As I have told you, I have written a notes as if I am delivering a lecture. So nothing to explain more than what is written here. So why LTI system so important? So what is the reason? Reason is many physical processes. Sorry, देखो ये गलत लिखा है, possesses होना चाहिए, processes नहीं. So ये देखो गलत लिखा है. Possesses the properties of linearity and time invariance, hence can be modeled as LTI systems. Then second point is LTI system can be analyzed in details, providing insight of the system properties. अब क्या है कि देखो आप क्या है कि now you are going to be exposed, because what is the purpose of this course is to just make you mentally prepare to just take on or to explore any system that you come across. ठीक है ना भाई, कोई सा भी सिस्टम अगर आप आपको हैंडल करने को मिले, एंड इफ यू आर कमिंग अक्रॉस, यू शुड बी एबल टू जस्ट क्लासिफाई, you should try to know more and more about that system. So how you are going to do that? So you'll try to just put that system or try to just map that system to some defined class. So once you are able to do that, that this system belongs to a particular class, and you have already done all the studies related to that class of system. तो इससे क्या होता है कि you come to know about a particular system very quickly, and you come to know about a particular system in depth, in detail. ठीक है, तो वही बात है कि LTI सिस्टम जो है, एक तो बहुत सारे सिस्टम्स जो है LTI सिस्टम्स होते हैं, और दूसरा है कि LTI सिस्टम का एनालिसिस आप बहुत डेप्थ में कर सकते हो, एंड you know many things, many attributes or properties of LTI system. Okay, so again, just see the basic definition of time invariance. What do you mean by time invariance? So in case of a continuous time, what happens that if the input to the system is xt and output is yt, then if you shift the input, or if you translate the input uh, to t naught, you can, just a minute. So if the input is translated or shifted, then simply what happens that output is also shifted in time domain. Okay. And similarly, the same thing is represented for discrete time systems.
तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ अ सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट मीन्स सिस्टम डज नॉट केयर अबाउट द टाइम origin of the signals, means the attributes of the signal is not depending upon time. और मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, आपका दिमाग का एग्जांपल दिया था भाई, टाइम वेरिएंट है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स दैट यू कम अक्रॉस आर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, so their outcome or the performance does not depend upon the origin of the time, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज आ गई, सो ये हो गया टाइम इनवेरिएंस का, एक बार फिर से रिकैप हो गया। देन कम्स द linearity. So what linearity says that suppose some input is 5k to some system and it produces output yk. Hmm. Then what happens if I take different inputs and if I just add them up, क्या था linearity में, क्या था additivity and homogeneity. Homogeneity indicates or tell you about the scaling, means you are just doing addition and you are doing the scaling. So what I have done, I have just scaled the first input, is like scale the second input, and whatever input or as many inputs I am able to consider, I will consider, and I have added. So this is the linear combination of all the input signals under consideration. Okay. So if I am talking about a linear system, and if the system is linear and phi1 is producing output y1 and phi2 is producing output y2 and phi n is producing output yn, then if the input is linear combination of various signals, then output will be also the linear combination of output of different or the individual outputs, ठीक है। तो अगर इनपुट इस तरह से अगर आप ऐड करोगे और स्केल करोगे, सो आउटपुट इज आल्सो added and scaled version, ठीक है, of individual outputs. So this is a property of linearity, and which is going to now see these two so what you have to do, how to exploit these properties. Because what is our goal, once we have the input that LTI system is very important, then what I have to do, I have to know as many properties of LTI systems as we can. Means we want to know more about the LTI systems, so that whenever in practical situation, or whenever you come across some LTI system, means you can be confident of handling that system, because you have a lot of prior information about that system. So how to exploit these properties, linearity and time invariance? Now the basic strategy is attempt to decompose signal into set of basic signals. Okay. So you are given some, you are coming across some signal and you are coming across some system. So, and you are convinced that the system is LTI system. So what you can do, you can just try to decompose your signal, whatever signal you have, into set of some basic signals. Because you can have a very complex signal. Now a signal can be, suppose this is a complex signal, but this signal can be decomposed, can be developed, can be generated, or can be synthesized with the help of, I can say, some sinusoidal signal or exponential signals. No issues. So you should be able to, and that process is called synthesization, or means, yeah, synthesization means you are going to synthesize a particular, means you are going to build up particular signal from a small pieces or from different pieces, ठीक है। ये हो गया synthesization, ठीक है ना।
और दूसरा होता है डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मीन्स अ सिग्नल इज अगेन broken into a some basic signals. Okay, so which basic signals that you'd like to use? Now this was the purpose of just teaching you in detail some of the basic signals. So again, we are going to use those basic signals that we have already studied. So signals that can provide certain degree of analytical convenience. अब ये देखो भाई, सिंपल सी बात है, ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत ना पड़े जिंदगी में तो अच्छा है. जिंदगी में जितना मैथमेटिक्स घुसाओगे, ठीक है, तो दिमाग पे उतना प्रेशर पड़ेगा. तो भाई ऐसा सिग्नल देखेंगे कि बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े, आसान रहे, काम चल जाए. ठीक है ना? ठीक है. तो देखिए क्या है, टू क्लासेस ऑफ द सिग्नल दैट सूट दैट व्हिच सूट द स्ट्रेटजी. अब दो क्लास हैं ऐसे सिग्नल्स के जो कि ये जो है फिट बैठते हैं यहाँ पे, जिसको हम एज ए बेसिक सिग्नल यूज कर सकते हैं. So what will be the strategy? Strategy will be to decompose the input signal into linear combination of these two signals. ठीक है, या तो मैं एक delayed impulse. So this is a delayed impulse. ठीक है ना? ये आपको मैंने पढ़ाया ही डिटेल में. So this is impulse function. ठीक है. तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा है, कोई सा भी सिग्नल है, कितना भी मे बी डिस्क्रीट टाइम, लीनियर डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूअस टाइम, आप उसको इम्पल्सेस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो. कोई कंटिन्यूअस सिग्नल भी अगर है, ये अगर कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड कंटिन्यूअस सिग्नल भी है, तो यू कैन टेक द इम्पल्सेस एट अ वेरी क्लोज टाइम इंस्टेंट एंड यू कैन रिप्रेजेंट the complex signal using the delayed impulse. ठीक है. Now second is a complex exponential. ठीक है, और एक्सपोनेंशियल सिग्नल. ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे. आई हैव ऑलरेडी जस्ट गिवन यू डिफरेंट क्लासेस ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स. ठीक है, डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूअस टाइम, कॉम्प्लेक्स, रियल. ठीक है. अच्छा, जब डिलेड इंपल्स यूज करते हैं तब एक कॉन्सेप्ट जो है which comes into play, that is called convolution. Now this is one of the few technical words or key words or key concepts which are used in this course, or which you supposed to learn in this course. Convolution, again, this is a mathematical operation, but that is very effective, and that is a very much used in any signal system, any signal or system, whenever you are going to deal with any kind of signal and system, and you are interested in the output of the signal. So this concept of convolution will come into play. So very important concept. So has anybody heard about this term, or have you gone through have you studied this in some mathematical course or mathematic course? कन्वोल्यूशन आपने पढ़ा है कहीं पे? हाँ भाई, ये सब मैथ्स में पढ़ा है ना? ये किस सब सेमेस्टर में पढ़ा है? सेकेंड. बहुत अच्छा. तो कुछ बताओगे थोड़ा सा, क्या है इसमें, क्या होता है कन्वोल्यूशन में? व्हाट यू अचीव थ्रू कन्वोल्यूशन? कोई बात नहीं. अब वहां पे कुछ एप्लीकेशंस वगैरह बहुत ज्यादा नहीं बताया गया होगा. सो अब ये चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ना, मैथमेटिक्स, ये बेसिक चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं कि भाई उसका आगे काम होता है. जैसे कन्वोल्यूशन आपने पढ़ा है, उसका काम यहाँ पे है. फोरियर भी आपने पढ़ा है, उसका भी यहाँ पे काम है. ठीक है. अब कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स जो है, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, वो कहाँ यूज करते हैं? फोरियर एनालिसिस में. ठीक है. सो
दो तरह के बेसिक सिग्नल्स यूज कर सकते हैं, एक तो डिलेड इम्पल्स, दूसरा एक्सपोनेंशियल। और डिलेड इम्पल्स यूज करेंगे अगर, तो हमें जब सिस्टम की प्रॉपर्टी पता करनी है, सो द कॉन्सेप्ट दैट विल कम इनटू प्ले इज कन्वोल्यूशन। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योर इनपुट सिग्नल यूजिंग, कहाँ भाग जा रहा है ये, इनपुट सिग्नल with the help of a Fourier series, ठीक है, और Fourier एनालिसिस, क्योंकि फोरियर भी एक बहुत ही डायनेमिक आदमी था, आई थिंक फ्रेंच मैथमेटिशियन, पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। एंड ही गेव अ वंडरफुल एनालिसिस about different kind of systems, signals, periodic, aperiodic, continuous, discrete, ठीक है। तो आप जो है फोरियर सीरीज पढ़ते हो, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म आप देखते हो whether the Fourier transform is applicable for periodic signal, or how you can find a, means basically you find Fourier transform for aperiodic signal. So how to find a Fourier transform for periodic signal, then how to just find a Fourier transform for a discrete signal, so that is a discrete Fourier transform. So he gave a wonderful analysis of the signals, and which is still making our life much easier while we are studying signal and systems. And he gave a, I think, in early, what I just read about him in the same book by Oppenheim. So he was a politician. So politician क्या होता है कि उसको एकेडमिया उसको काफी अवॉइड करता है. इफ यू सी सम some academician who is also politician, so उसको क्या होता है कि एकेडमिक्स में उसको अवॉइड करते हैं. तो उसके बाद ये कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह में भी भाग लेते थे. So that's why his work was not taken seriously at the time when he just proposed all these things. I think in maybe last decade of 18th century, मतलब 1890s, this is what I remember. And after, I think, at least 20 years later, the people found that he gave wonderful things. And still the concepts or the analysis given by Fourier is holding good. And we are just using it, means you will see the book of signal system, quite a few chapters are dedicated for Fourier analysis for different kind of signals. So this was the contribution of the Fourier. Okay. So let us start with the discrete time LTI system. क्योंकि हमें क्या करना है भाई, दो तरह के सिस्टम होंगे, एक तो कंटिन्यूअस टाइम, एक डिस्क्रीट टाइम. और डिस्क्रीट टाइम में क्या है कि थोड़ा सा आसान रहता है, थोड़ा सा जो है उसका एनालिसिस आसान रहता है, क्योंकि जैसे ही कंटिन्यूअस टाइम में आएंगे तो वहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होने लगेगा. और फिर अब आपने पहले भी देखा होगा कि जब डिफरेंशिएशन कोई सा अगर है तो कंटिन्यूटी और पता नहीं क्या क्या, देयर आर सो मेनी थ्योरम्स कि इफ सम फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, सो देयर आर सम थ्योरम फॉर दैट. तो ये सारी चीजें, जो ये सारा जो प्रॉब्लम है, ये डिस्क्रीट टाइम के साथ नहीं है, ठीक है. और ये हमने तब भी देखा था जब आप एक इम्पल्स फंक्शन जो है डिफाइन कर रहे थे. फाइन. सो व्हाट वी नीड, so ultimately I am interested in knowing the response of an LTI system. Means I am just feeding some input and I am interested in knowing what will be the response, what will be the output. That's it. That is our goal that we want to know. Okay. So for that, what you require to know is we need to know the response of the system to an impulse at t equal to 0. ठीक है. अब यहाँ पे t नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अब जो होना चाहिए था, जब हम LTI की बात कर रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम, n इक्वल टू 0. ठीक है. यानी कि हम जो है, हमको बस एक चीज पता रहे
कि हमने एक इम्पल्स दिया सिग्नल सिस्टम को, ये हमारा ये डेल एन हो गया। सो इट इज एग्जिस्टिंग एट एन इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसके लिए जो है जो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है इस पर्टिकुलर इम्पल्स के लिए, what is the response of the system, ठीक है। सो इफ आई नो दैट मीन्स बाकी चीज मैं पता कर लूंगा, बाकी फिर कोई सा भी सिग्नल आ जाए हम उसका रिस्पॉन्स पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है छोटी बात नहीं है कि आपको बस एक इम्पल्स जो है उसका रिस्पॉन्स अगर सिस्टम बता दे, ठीक है ना, या आपको बता दिया गया, ठीक है, सिस्टम के बारे में इतना बता दिया गया। मान लीजिए रिस्पॉन्स में एच से जनरली रिप्रेजेंट करता हूं, तो सपोज एच एन, सो यू आर टोल्ड दैट इफ यू गिव if some system is there and if you give input as a delta n, the output is going to be hn, ठीक है। So this is the impulse response. This is a, and this h is invariably used in all the books. So this is called impulse response at t equal to 0. So this ht is a impulse response. So this hn is a impulse response. Impulse response. So because it is a response to an impulse, ठीक है, of any LTI system. Okay. Now अब आगे आइए। Okay, so discrete time LTI system. So input is suppose xn. Now some generalized input is there. This is some system, ठीक है। Then output is a yn, ठीक है। Okay. Now xn can be represented as a linear combination of a set of basic signals. And what signal we are going to consider here? We are going to consider as signal as a delayed impulses. So what it is saying that any sequence, input sequence, xn is an input sequence. Okay. So any input sequence you can represent as a linear combination of set of basic delayed impulses or set of basic delayed impulse sequence or set of basic delayed impulses. That's all. Then yn can be computed as a superposition of responses of the basic input signals. अब आपने क्या किया, इनपुट को क्या किया, इनपुट सिग्नल है उसको आपने डिलेड इंपल्स फंक्शन और इंपल्स सीक्वेंस में डिकम्पोज कर दिया, ठीक है ना। और हर एक इंपल्स का, ठीक है, रिस्पॉन्स आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग इंपल्स आएंगे और उसका रिस्पॉन्स आपको कंप्यूट करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ओवरऑल जो रिस्पॉन्स होगा सिस्टम का वो क्या होगा, समेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल इनपुट सीक्वेंसेस। और let me use, ज्यादा परेशान मत होइए, I will just elaborate it. So what happens that the properties of superposition and time invariance will allow us to develop a complete characterization of any LTI system in terms of its response to a unit impulse, and that is referred to as a convolution sum. Now what is this convolution sum? अगर आपको भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, it is further elaborated. So discrete time LTI system का response अगर हमको निकालना है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, द ऑपरेशन दैट विल हैव टू परफॉर्म इज कन्वोल्यूशन सम. नाउ व्हेन आई एक्सप्लेन दिस इट विल बी क्लियर टू यू. नाउ सपोज दिस इज अ, सबसे पहले क्या है देखिए, एक इनपुट सिग्नल है xn. ठीक है. नाउ दिस कैन बी decomposed or this can be written as a summation of individual impulses. ठीक है. अब जैसे ये इम्पल्स है देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x1, ठीक है, which is representing the magnitude, and delta n-1, ठीक है, multiplied by impulse at n-1, ठीक है, shifted impulse और the delayed impulse. ठीक है. देन इसी तरह से ये जो आपका है, ये जो टर्म है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, दूसरा टर्म हो गया, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय डेल n-2, डेल्टा और इम्पल्स शिफ्टेड एट 2. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ईच इम्पल्स, ईच इम्पल्स as summation of the magnitude at that instant of time, ठीक है, multiplied by the delayed impulse. ठीक है. So you can easily understand that this xn can be represented as summation of, और अभी मैं एक जनरलाइज लिख रहा हूं इसलिए आई एम टेकिंग k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के डेल्टा n-k. ठीक है. क्योंकि ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं जैसे ये आपका, सो आई थिंक इट इज क्लियर. जैसे आप देखिए जो पहला टर्म है x, हाँ, so the link was broken. Okay, so is it clear? Means can you write the given sequence as a summation of xk multiplied by delta n-k? Is it clear? Which is nothing but weighted delayed impulse, summation of weighted delayed impulse. Is it clear? Yes, sir. Okay. So what it means, that representation of an arbitrary sequence, कोई सा भी sequence लीजिए, arbitrary sequence as a linear combination of shifted unit impulse, that is delta n-k, where xk is the weight in the linear combination. ठीक है. तो हमने क्या कर लिया, हमने जो भी इनपुट सिग्नल था उसको हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिलेड इंपल्स विथ सम वेट, और उसको क्या बोलेंगे, वेटेड डिलेड इंपल्स. ठीक है. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेड डिलेड इंपल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन ऑफ द इनपुट सिग्नल और इनपुट सीक्वेंस. तो हमने क्या किया, इनपुट सीक्वेंस को क्या किया, डिलेड इंपल्सेस में समेशन ऑफ डिलेड इंपल्सेस से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. अब आगे बढ़ेंगे. अब डिस्क्रीट टाइम यूनिट इंपल्स रिस्पांस एंड द कन्वोल्यूशन सम. एक चीज हमने आपको बताया था, एक चीज हमको पता होना चाहिए भाई, वो यूनिट इंपल्स रिस्पांस जो है वो हमको पता होना चाहिए. ठीक है ना. कम से कम एक इंपल्स का किसी भी इंस्टेंट पे हमको रिस्पांस पता होना चाहिए. ठीक है. सो लेट, अब हम रिस्पांस की बात कर रहे हैं. सो लेट HKN denotes the response of the linear system to the shifted unit del n-k. ठीक है ना. अब हमने क्या किया, एक इंपल्स लिया, जनरलाइज इंपल्स. सो द व्हाट इज, सो इंपल्स इज शिफ्टेड एट n equal to k. सो दिस इज अ डिलेड वर्जन, delayed impulse.
Now so if I just give this input to the system, and we are talking about LTI system. So if I am giving this input to LTI system, और अगर LTI सिस्टम पे भी नहीं दे रहे हो, किसी भी सिस्टम पे दोगे तो उसका रिस्पॉन्स तो कुछ होगा ही, या कुछ नहीं होगा, या जीरो होगा, या कुछ ना कुछ होगा. So if I am just feeding input as a delayed impulse and output I am denoting as HKN, ठीक है, means I am getting the response at kth, means for kth impulse, ठीक है, kth delayed impulse I am getting this response, ठीक है. So the response yn, अब हमको क्या है कि एक जो इंडिविजुअल डिलेड इंपल्स है उसका रिस्पॉन्स पता है, ठीक है. देन आई एम थिंकिंग ऑफ कंप्यूटिंग द ओवरऑल रिस्पॉन्स yn when the total input sequence is xn, ठीक है. So the response of yn of the linear system to a input xn, ये क्या होगा भाई? अभी ये कोई लीनियर सिस्टम है अगर, ठीक है ना, अभी टाइम इनवेरिएंट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई लीनियर सिस्टम है, तो इनपुट अगर जो है xn है तो yn जो रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? इज सिंपली द वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक रिस्पॉन्सेस, ठीक है. अब उसमें क्या होगा कि भाई एक पहला इंपल्स दिया, उसका रिस्पॉन्स मिल गया हमको, H0 मिल गया, फिर H1 मिल गया, H2 मिल गया, HK मिल गया, ठीक है. तो हमने जो पढ़ा था कि भाई रिस्पॉन्स क्या होगा ओवरऑल, वो भी क्या होगा? वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेस, ठीक है. सो ये तो देखिए, ये हो गया स्केलिंग फैक्टर हो गया, और ये उसका रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है. सो yn will be again, it will be the summation of the responses I get corresponding to the delayed impulse response, weighted delayed impulse response, ठीक है. So this is the summation, or this is the sum that this is means this summation gives you the overall response of the linear system, ठीक है. जहां पे क्या है देखिए, ये देखिए, जैसे x0 del 0 आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? H0n. x1 del n-1 आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? H1n. xk del n-k आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? HKN, ठीक है. ये और ये सारे समेशन आप ये कर दो तो आपको इनपुट सिग्नल मिल रहा है, तो ये सारे समेशन जो आउटपुट पे आ रहे हैं, ठीक है, उसका क्या, नहीं, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, देखो इसके साथ स्केल भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ देखो x01 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ x1, क्योंकि इसकी भी स्केलिंग होगी एज पर द डेफिनेशन ऑफ, ये भी मल्टीप्लाई होगा xk, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा, देखिए, ठीक है, एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द linearity. So this is a output you are going to get if the system is linear. भाई ये और कहीं नहीं होगा, ये तभी होगा जब सिस्टम लीनियर है, तब आप इस तरह से निकाल सकते हो, समेशन करके आप जो है ओवरऑल रिस्पॉन्स निकाल सकते हो. सिस्टम लीनियर नहीं है तो ये फंडा आप नहीं लगाओगे, नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. So how we conclude is, so the property of time invariance tells us that responses of a time invariant system to the time shifted unit impulses are simply the shifted versions of one another, ठीक है.
प्रॉपर्टी, अब देखिए ये तो हो गया ऊपर वाला लीनियरिटी हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो है टाइम इनवेरिएंस, उससे हमको क्या फायदा होगा वो देखने की बात है। So property of time invariance tells us that the responses of a time invariant system at time shifted unit impulses are simply the shifted version of one another. जैसे कि आपका जो है, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई देखो, हमने एक अगर अभी इंपल्स दिया, उसका मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला, थोड़ी देर बाद मैं और फिर एक इंपल्स दूंगा, जो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो भी क्या होगा, जो पहला रिस्पॉन्स था उसी का शिफ्टेड वर्जन रहेगा, ठीक है। और वट एवर स्केलिंग यू आर गोइंग टू डू, यू जस्ट कंसीडर दैट, क्योंकि सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो अभी इंपल्स दिया, जो रिस्पॉन्स आएगा, थोड़ी देर बाद जो इंपल्स दूंगा उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। अभी मान लो रिस्पॉन्स अभी हमने एक इंपल्स दिया x0 और डेल्टा 0, ठीक है। तो इंपल्स रिस्पॉन्स आ गया h0, ठीक है ना, n। और थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम दे रहे हैं एट n इक्वल टू k पे इंपल्स रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। सो आई एम सॉरी, इंपल्स इनपुट दे रहे हैं, सो आई एम गिविंग द सेम इनपुट बट it is scaled with sk। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, इसी का जो है, देखिए ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स आया था, इसी का क्या होगा, शिफ्टेड वर्जन आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए एस, ये भी x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे भी क्या होगा, h0 जो है वो क्या हो जाएगा, hk n-k, ठीक है ना, और ये xk से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द hk और h0 और hk ये क्या है, ये जो है, ये दे आर द सेम रिस्पॉन्सेस, दे आर ओनली द शिफ्टेड वर्जन्स। बात समझ में आ रही है, क्योंकि रिस्पॉन्स देखिए चेंज नहीं हो रहा है। रिस्पॉन्स अगर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है तो चेंज नहीं होगा, इंपल्स रिस्पॉन्स वो क्या होगा, सिर्फ शिफ्ट होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं। सो अगेन, अब इसीलिए हमको क्या है कि हमको भाई बस अगर किसी एक इंस्टेंट पे अगर रिस्पांस मिल जाए, इंपल्स रिस्पांस, तो बाकी इंस्टेंट का मैं कैलकुलेट कर लूंगा, क्योंकि वो क्या होगा, दैट विल बी ओनली द शिफ्टेड वर्जन ऑफ द ऑफ whatever impulse, whatever response which is known to me, ठीक है। इज इट क्लियर? So what you required, your minimum requirement is, that's why that you must be knowing the response, impulse response of the system at a particular instant, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर t इक्वल टू 0 या n इक्वल टू 0 पे पता है तो ठीक है, कहीं और पे भी पता है तो उसको वापस शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन ये बात पक्का है कि रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स जो है वो सेम है, ठीक है। उसकी स्केलिंग सिर्फ चेंज होगी डिपेंडिंग अपॉन द स्केलिंग ऑफ द इनपुट इंपल्स, ठीक है। अदरवाइज आई एम गोइंग टू गेट द सेम रिस्पॉन्स, ठीक है, सेम इंपल्स रिस्पॉन्स आई एम गोइंग टू गेट। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अच्छा, यस सर। अच्छा, अब क्या है कि मान लीजिए, नाउ टेक सम काउंटर एग्जांपल। मान लीजिए कि सिस्टम लीनियर है, क्योंकि भाई लीनियर टाइम इनवेरिएंट तो अभी पढ़ते रहोगे आगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई अगर एक काउंटर एग्जांपल लें कि सिस्टम लीनियर है लेकिन टाइम इनवेरिएंट नहीं है, ठीक है। सो लीनियर सिस्टम है, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, लीनियर बट नॉट टाइम, बट टाइम वेरी, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब ये मान लीजिए xn है, दिस इज xn, आई एम क्विकली जस्ट गोइंग थ्रू दिस एग्जांपल। सो दिस इज xn, ठीक है। सो इसमें देखिए ये जो सीक्वेंस है इसमें 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। और तब आपको अगर टाइम वेरिंग अगर है, सिस्टम अगर टाइम वेरिंग है, तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे आपका रिस्पॉन्स पता होना चाहिए। जैसे h मतलब n इक्वल टू 0 पे हमको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। n इक्वल टू -1 पे हमको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। और n इक्वल टू 1 पे हमें ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 3 इंपल्सेस हैं इनपुट में, ठीक है, 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। एट द इंस्टेंट n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू -1, ठीक है। और सिंस द सिस्टम इज टाइम वेरिंग, भाई अलग अलग इंस्टेंट पे उसका जो है रिस्पॉन्स अलग अलग है। सो दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट
n equal to 0, this is the response of the system at n equal to -1, और दिस इज अ रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एट n इक्वल टू 1। ठीक है, ये देखिए आपस में इनका कोई इस तरह का नहीं है कि ये शिफ्टेड वर्जन नहीं है एक दूसरे के। सो अगर हैड दिस सिस्टम बीन अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो आप इसका जो है ये H0 का जो शिफ्टेड वर्जन, जैसे आप H0 n-1 लिखते, आप इसको जो शिफ्ट करते, सो इट वुड हैव बीन दिस वन। ठीक है, ये जो है ये क्या होता, ये होता आपका H1 होता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे क्या है, रिस्पॉन्स आपका अलग अलग है, इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके, तो हमको क्या करना है, अब हमको भाई टोटल रिस्पॉन्स निकालना है। क्या करें, रिस्पॉन्स तो निकालना ही है कि भाई ये आया, मतलब इनपुट सिग्नल है, 3 इंपल्स है, तीनों के समय रिस्पॉन्स क्या होगा वो हमको निकाल लेना है। ठीक है, और ये बता रहा है कि लीनियर है, लीनियर सिस्टम है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये, अब आप देखिए पहला जो है आपका n इक्वल टू -n पे, n इक्वल टू -n पे जो सिग्नल है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x -1 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या होगा, एडवांस सिग्नल del n+1। ठीक है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, अब हमको निकालना है ये अगर इनपुट है तो रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा, h जो भी रिस्पॉन्स है n इक्वल टू -1 पे, n इक्वल टू -1 पे रिस्पॉन्स ये है, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय द स्केलिंग फैक्टर दैट इज x-1। ठीक है, और x-1 एक निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू अगर है तो देखो आप जो है एक निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो रिस्पॉन्स को। सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग निगेटिव वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ये निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव आ जाएगा, ये भी निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो एक आपको निगेटिव मिलेगा, हाँ सॉरी, ये निगेटिव हो जाएगा, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव वैल्यू, इससे यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई ईच रिस्पॉन्स विथ दिस मैग्नीट्यूड, दिस इज x-1। ठीक है, तो x-1, ये -1 पे क्या मिल जाएगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, 0 पे भी नेगेटिव मिलेगा, 1 पे पॉजिटिव मिलेगा, और 2 पे नेगेटिव मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू गेट। ठीक है, उसी तरह से क्या है, दूसरा जो इंपल्स है वो क्या है, n इक्वल टू 0 पे, सो दिस इज डिफाइंड लाइक दिस, और जो आउटकम मिलेगा और आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, x0 दैट इज मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड विथ h0। ठीक है, मींस रिस्पॉन्स h0। तो ये जो है एक वैल्यू से, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड दिस वैल्यू इज आई थिंक हाफ, द वैल्यू इज हाफ, ये क्या है, कहाँ पे है, h0। सो दिस इज सपोज ये 1 है और ये हाफ है, so what happens, the half is multiplied with all the magnitude which are available in this response। ठीक है, लेकिन इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, दिस इज द रिस्पॉन्स यू आर गेटिंग एट n इक्वल टू 0। सिमिलरली यू आर गेटिंग जो तीसरा टर्म है वो ये है, and for this input you are getting this response h1 multiplied by x1। ठीक है, so this is the response you are getting। अब क्या है भाई, ये है LTI सिस्टम, तो टोटल अगर इनपुट सिग्नल ये सम हो रहा है तो टोटल आउटपुट सिग्नल भी क्या है कि आप तीनों जो निकाले हो इसको सम कर दो। आप देख लो भाई, आप यहाँ पे देख लो, ये जो है ये तीनों जो आपके निकल के आए हैं रिजल्ट्स, इसका सम कर लो, ये तीनों का सम कर लो। ठीक है ना, सो इफ यू जस्ट सम अप, सो व्हाट यू गेट yn, सो दिस इज व्हाट यू गेट yn। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, रिस्पॉन्स एट टाइम n ऑफ अ लीनियर सिस्टम इज simply superposition of responses due to input values at each point in time। ठीक है, तो ये क्या करना है, तीनों रिस्पॉन्स मिल गए अलग अलग इंपल्सेस के लिए,
और आपने क्या किया, तीनों इनपुट्स, तीनों जो इनपुट्स डिलेड इंपल्सेस हैं उसको जो आपने ऐड किया तो आपको इनपुट सिग्नल मिल गया, और आपको जो रिस्पॉन्स आए हैं सारे उसको ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल आउटपुट रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, so what you have achieved or you have obtained the response of LTI system for a given input signal by knowing the impulse response of the system at different instants under consideration। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये टाइम वेरिंग सिस्टम है। इसके कारण क्या है कि आपको सो यू हैव टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, बिकॉज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम is varying. Impulse response of the system is varying with time, and that's where you have a 3 responses at 3 time instants. So if you are told that the system that you are dealing with is a time invariant system, तो आपको क्या है, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि आपको फिर क्या है कि आपको अदरवाइज क्या होगा कि भाई ये तो देखो यहाँ पे संजोग से तीन ही, देर आर ओनली 3 वैल्यूज, so suppose if you are 100 values, so you require 100 impulse response to know at different instants, and then you have to sum up the 100 responses, so you can understand the complexity that can be added in your life, means with regard to this subject. So once you are told that the system is a time invariant, इसका मतलब हो गया कि भाई आपको किसी भी इंस्टेंट पे जो एक इंपल्स आ रहा है उसका रिस्पॉन्स अगर पता हो तो आप बाकी सारे इंस्टेंट पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है इंपल्स का वो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होगा, वो शिफ्टेड वर्जन ही होगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो क्या है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। बात समझ में आ गई? So in general, so let me conclude. So in general, the responses HK need not be related to each other for different values of K. However, if the system is also time invariant, then these responses to time shifted unit impulses are all टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ ईच अदर। ठीक है, और ये अगर बात हो गई तो रिस्पॉन्स देखिए HKN इज द टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ H0N। ठीक है, सो HKN इज नथिंग बट टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ H0 at K। ठीक है, सो इफ दिस इज द केस, देन we can just write a generalized expression that is a response of LTI system is nothing but summation of these impulses, shifted impulses, multiplied with the corresponding magnitude of the signal at that instant. So this is a and K goes from minus infinity to infinity. So you have to sum up this weight with the impulse response, shifted version of the impulse response, and this summation of multiplication of these two signals is called convolution sum. So this is referred as convolution of the sequence XN and HN. So convolution of the sequence XN and HN is referred as XK multiplied by HN minus K summation K ranging from minus infinity to infinity, and mathematically it is represented with this symbol steric। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सिंबल को, क्या बोलेंगे, स्टेरिक क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक्स। एस्ट्रिक्स कल ही यार पढ़ा था, फिर जो है भूल गया। एस्ट्रिक्स मतलब सुना तो है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में देखो गड़बड़ है। एस्ट्रिक्स, एंड दिस इज हाउ, जैसे और भी बच्चे जो है 2-4 बार मन में बोल लें। ठीक है, एस्ट्रिक्स, क्योंकि और भी बहुत लोग नहीं बोल पाते होंगे।
तो एक तो चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, एजुकेशन जो है कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, किसी को भी सीखना पड़ता है जिंदगी भर, ठीक है। ये समुद्र है, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। 5 साल पहले मैं शर्माता, ठीक है, लेकिन अब शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप शर्माने लगे आपकी लर्निंग जो है स्लो हो जाती है, ठीक है। फिर देखो भूल गया, एक बार और प्रोनाउंस करवाओ। एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स ना, Yes, sir. एस्ट्रिक्स। बाकी और भी आधे बच्चे नहीं प्रोनाउंस करते होंगे, नहीं पता होगा किसको। एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कन्वोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड, ओके। तो सो नाउ आई विल कंक्लूड दिस लेक्चर। बात समझ में आ गई आपको? क्या है? एलटीआई सिस्टम है। आप कोई बेसिक सिग्नल यूज करोगे, उससे क्या करोगे, आप इनपुट सिग्नल को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। सो यू डिकम्पोज इनपुट सिग्नल यूजिंग अ डिलेड इम्पल्स, ठीक है। एंड यू हैव टू नो द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम for 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 input impulse, so that we call as a impulse response. So you should be able to know the impulse response of the system at any instant of time. So if you know that, then you can compute the overall response of an LTI system very easily, ठीक है। So in the next class we will just take a few examples. So what that will do, that will revise the concept also, and that will just because this finding convolution of two signals is very important, okay? And there are some tricks also. I know some tricks. I still striving for some of the tricks. So maybe I will come out with some good tricks to solve the problem of convolution. Okay, so that's all for this class. Let me take the attendance. Anything that you want to say in the meantime? No, sir. समझ में, बात समझ में आ गई? Oh, yes, yes, sir. Sharing. शेयरिंग स्टॉप हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just a minute. Okay, so the class is concluded. Do you have any class in the next from 11 to 12? Yes, sir, maths. चलो ठीक है। Yes, sir. मैथ्स Yes, अभी sir. so still Yes, sir. चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़िए मैथ्स। Yes, sir. It's math third. चलो ठीक है, ओके ओके। सो चलिए पढ़ते भी रहिए, एंजॉय भी कर लीजिए। अब क्या करिएगा, हमें कोई देखिए ऐसा नहीं है, हम कोई जबरदस्ती क्लास नहीं लेते हैं, लाइक मैनी ऑफ माय कलीग्स, ठीक है। लेकिन चलो जब शुरू कर दिया तो ले लिया, आपने भी पढ़ लिया। ओके, सो हैव अ गुड डे। Okay. Thank you, sir. sir.